Hello viewers. Once again, very warm welcome to my channel SAP FICO with Ritu. So today we will learn how to convert the cost, how to convert the expenses into cost elements. So there are basically three methods by which we can convert an expense into an cost element, into a cost element rather. So we will go to FS00 first and we will see. Let me show you how many expenses I have got into my list. So these are the expenses I have created under administrative expenses. And these are my expenses which are uh, under the heading manufacturing expenses. So all these are expenses. These are standard expenses, so you can find them different, depending upon the needs of manufacturing company or any organization. So uh, कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी अलग मिल सकता है. So these are the standard expenses. So now suppose we have to in cost controlling part, we first of all, it's quite important, is it's imperative that we have to convert the expenses into the cost element. This is quite important, otherwise कोई भी transaction possible नहीं हो सकता है. तो what we will do, so there are three methods today I'm going to tell you. So first two methods I will tell you, जिसमें कि we can convert these expenses into cost elements to one by one only. तो one by one जैसे हम इस पे जाते हैं, तो what we will do, we will go to the edit set, no sorry, ed, edit cost element. यहाँ पर we will give suppose 0103 2023. That means from March. गलत दिया मैंने. Yes, it will be dot 2023. Yes. So this is the correct format in which we have to write the date, otherwise the system will not take. So इधर हमने डाल दिया कि this is a 6000 is an expense. Now this has been converted into a cost element. So यहाँ पे मास्टर मैंने एंटर किया इसको. हाँ, फिर से एक बार दिखा देती हूँ. Sorry. Suppose this is a office rent. This is a kind of expense from FI side. We will go here and we will go to edit cost element and we will click here on the master data. So this यहाँ पे वी कैन सी कि ये कॉस्ट एलिमेंट दिखा रहा है, बट एफ आई साइड में हम देख रहे थे, मतलब इधर हमने जैसे एडिट कॉस्ट एलिमेंट को वी क्लिक ना, तो वी गो टू कंट्रोलिंग पार्ट. तो उधर एफ आई साइड में इट वाज शोइंग एज एन एक्सपेंस, बट हियर जैसे ही हम लोग इधर आते हैं तो इट विल स्टार्ट शोइंग अप एज cost element. Now what we have to do here, there are so many cost element categories, so what we have to take, we have to take one here, because uh, we have to convert all the expenses into primary costs. So what is primary cost, what is secondary cost, this all will all these will be explained in my future videos. So definitely, so here we have to understand initially that we have to convert all the expenses into primary costs. So uske liye one hota hai, we will click here as okay, and then we will save it. Yes, now so cost element has been created. So ये जो office rent है, ये cost element के लिए ready हो गया. अब we can post any transactions with this 6000. अगर ये convert नहीं होगा तो ये आपको system मतलब करने के लिए नहीं देगा. तो हम लोग चलो देखते हैं. पहले फर्स्ट हो गया, उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे. सो ये मैंने ये पहला मेथड आई टोल्ड यू कि एडिट कॉस्ट एलिमेंट में जाके वी कैन डू दिस. सेकंड देखते हैं हम लोग, सेकंड वाला. सो फर्स्ट वाला क्या है देखो, यहाँ पे we have already created 6000 as cost element. Now we will create 6001 as the cost element, which is what is this, office salaries. So we will convert office salaries into a cost element. So what we will do,
KA01. This is the T code by which we can convert these expenses into the cost element. 6001, 6001 master data same, इसमें भी same है, इधर में again we will take one, okay, and then we will save it. See, this has been created as a cost element. So these are the two methods by which we can create we can convert the expenses into the cost elements. So these are the two methods by which we can convert expenses into cost elements, of course, but these are one by one. Suppose अभी एक create किया, so you have to convert that into an cost element, तो फिर it's fine, no problem. But so many expenses are there in a company, you will find thousands of expenses, so it's not possible to convert them one by one into cost elements. So उसके लिए what we have to do, so but before that two methods I have already told you. उसके पहले एक experiment करेंगे और देखेंगे कि system हमको उसको करने के लिए दे रहा है या नहीं दे रहा है. तो हम, if suppose we will go to a B50, a B50, 6003, let me check. So here 6000, 6001 we have already, these two have already been created or have already been converted into cost elements. So we will start our experiment with 6002, जो कि अभी cost element में convert नहीं हुआ है. तो let's see क्या system will allow us to post the transaction with it. So what is the experiment we are trying to do here, कि ये जो expense है, this expense we want to send this expense to, or we want to capture this whatever expense in a certain cost center. So इस cost center को ये क्या है, इसको हम एक cost center में डालना चाहते हैं. So what are the cost centers with it? ये first वाला मान लो manufacturing cost center है, ठीक है. तो ओके वन सेकेंड, ये ओ सॉरी ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला है. तो लेट्स सी वेदर वी हैव गॉट एनी कॉस्ट सेंटर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. नो, हम लोग के पास अभी कुछ नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में. सो हाउएवर दिस 6002 इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सो दिस विल ऑब्वियसली गो टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेंटर. अभी नहीं है हमारे पास, इसलिए जस्ट मैं एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको दिखा रही हूँ कि 101 में कोई भी कॉस्ट सेंटर है, वी जस्ट वांट टू पुट इट capture this cost center into this cost center. So what the system says, see, create account 6002 for as a cost element into controlling area C123. तो इसमें सिस्टम क्या बोल रहा है कि ये जो अकाउंट है ये this is not a cost element, or until and unless you convert any expense into a cost element, it's not possible for the system to send this expense into any cost center. So obviously हमारा एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एक्सपेंस है उसको हम कॉस्ट सेंटर में डालते हैं कैप्चर करने के लिए कि भाई ये जो एक्सपेंस है ये इस कॉस्ट सेंटर में जाएगा, ये एक्सपेंस इस कॉस्ट सेंटर में जाएगा, लाइक दैट. और फिर कॉस्ट सेंटर में हम देखते हैं कि कितना एक्सपेंस हमारा जमा हुआ है एंड ऑल दैट. सो दिस इज अ सिस्टम प्रोसेस की एक एक्सपेंस को हमको कॉस्ट सेंटर में भेजना ही पड़ता है. लेकिन भेजने के लिए इन ऑर्डर टू सेंड दैट कॉस्ट or that expense into any cost center, we will have to convert that expense into cost element first. This is the first step, otherwise system will never allow you to send that expense into any cost center. तो ये नहीं है, हमने देख लिया. अब अगर हम इधर जीरो वाला डालते हैं विच वी हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू द कॉस्ट एलिमेंट, तब सिस्टम क्या बोलता है, जीरो एंटर योर. तो ये एक दूसरा है, मतलब कोई दूसरा एरर है, इसके बारे में वी विल नॉट टॉक अबाउट. बट दैट द इनिशियल एरर द सिस्टम डिड नॉट थ्रो. व्हाई? बिकॉज उस एरर से सिस्टम मतलब सिस्टम को वो एरर नहीं मिला. क्या एरर नहीं मिला? कि ये जो 6000 है कि उसको कन्वर्ट कॉस्ट एलिमेंट, ऐसा कुछ एरर नहीं मिला. व्हाई? बिकॉज 6000 इज ऑलरेडी converted into a cost element. Okay, so this is the purpose I just wanted to show to you. So
cancel it because this is not our purpose. I just wanted to show you that system will never allow you for this process. Okay, sorry, exit कर देते हैं इसको. तो अब हम देखेंगे थर्ड मेथड. हमारा जो तीसरा मेथड क्या है, इन दैट मेथड वी कैन कन्वर्ट अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इनटू कॉस्ट एलिमेंट्स डायरेक्टली इन अ बल्क. सो लेट्स गो टू आवर डॉक्यूमेंट. सी ये जो फर्स्ट स्टेप है, मैंने फर्स्ट कर दिया. और फर्स्ट स्टेप, थ्री मेथड्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर. हाँ, जो फर्स्ट मेथड है उसको मैं आपको ऐसे वीडियो के अंदर थर्ड मेथड में बता रही हूँ. सी फर्स्ट मेथड, सेकंड और थर्ड मेथड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सी सेकंड एंड थर्ड. सी दिस इज सेकंड मेथड, K01 I told you. ठीक है. And second method and third method is directly FS00. We will go to edit cost element where we will convert the expense into cost element. So these two methods I have already told you. मैंने आपको ये दो मेथड पहले ही बता दिया. अब मैं फर्स्ट मेथड में जा रही हूँ. दिस इज द फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, बहुत सारा एक्सपेंसेस को एक साथ बल्क में बता सकते हैं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू SPRO. फर्स्ट मेथड includes, I mean ये वाला जो लेंदी मेथड है, this includes three steps: cost element accounting, master data, cost elements. ये automatic creation of primary and secondary cost elements. So make default settings, create batch input session, execute batch input session. So these are the three steps which are included in this method, this which is a lengthy one, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा बल्क में करते हैं. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. सो हम क्या करेंगे, इधर न्यू एंट्रीज देख लेते हैं. ऐसा ही है ना. So it will ask you for the chart of account and then new entries, and then what we have to do here कि account from where to where, कहाँ से कहाँ तक आप इसको जो है कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब किस अकाउंट से लेकर किस अकाउंट तक यू वांट टू कन्वर्ट दीज एक्सपेंसेस इनटू कॉस्ट एलिमेंट्स. तो हमको ये डालना है इधर में. तो हम देखते हैं कि हमारा कहाँ से कहाँ तक. तो देखो यहाँ तक 6000 और 6001 को वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दी, or we have already converted them into cost elements, so no need to include these two also. So हम 6002 से 6008 तक डाल देते हैं. ठीक है. 6000, अच्छा इसको ऐसे ले भी सकते हैं यहाँ से, नो प्रॉब्लम. 6002 से 6002 से तक लेना है, 6008 तक ले लिया. और एक है इधर देख लेते हैं, दूसरा वाला जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो 5000 से लेकर 5006 तक है. तो हम इसको भी ले लेते हैं इधर में. 5000 से लेकर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, 5000 से लेकर 5000 से लेकर 5006 तक. so, 5006 तक. ओके. तो उसके बाद इसको सेव कर देते हैं. सेव. ओह सॉरी, मेन चीज तो देना है भूल गए. माय माइंड गॉट डिस्ट्रैक्टेड एक्चुअली. इसमें 1 देना है हमको क्योंकि कैटेगरी 1 हमको लेना है. और ये सेव कर, सेव हो गया. अब हम बाहर निकल जाते हैं. we will go to the next step which is create batch input. तो यहाँ पर हमने ये पहले से डाला हुआ है. we will only execute here. This message will come. Now we will
come out, execute करके come out हो गए. Now we will go to the third step, execute batch input session. So here our batch input session is there. So let me show you the second step. Second step we have to execute only, and this message has already been created. Now we will go to the third step, which is execute. Now उसको process करना है. Process करने के लिए background और export mode में we will just do it. तो उसके पहले one thing I want to show you कि ये जो है वो cost element में नहीं बदला हुआ है. ये देखो यहाँ पे 1 नहीं है ना, 1 नहीं है, इसका मतलब 6002 से, ओहो, 6002 से ये जो है यहाँ तक they are not cost element. Just कैसे मैंने दिखा दिया आपको. Now process, background processing, export mode, process. So one session transferred to background processing. Go to, now अब हम लोग चेक करेंगे. Go to FS00, you will find expense GL have been created as cost elements. तो अभी हमने चेक किया कि 6002 जो है वो cost element नहीं है, लेकिन अब थोड़ी देर बाद हम लोग चेक करेंगे तो ये cost element में बदल जाएगा. Processed K01 सब processed तो दिखा रहा है. To process, processed 15, 20. देखते हैं निकल के, तो राइट तो नहीं दिखा रहा है. You'll have to go out and then come again, or we can refresh it. दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. 6002 edit cost element, ये देखो ये आ गया ना, 1 आ गया इसके अंदर. अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि नहीं था 1, है ना. और मैंने ये भी दिखाया था कि 2 से जब सिस्टम में डाल रहे थे तो सिस्टम वाज नॉट अलाउइंग. सो देखो 3 में भी देख लेते हैं. ये देखो सब में आ जाएगा वो, सब में. सो टोटल 6002 से लेकर 6008 तक, that all have been converted into the cost elements. 5000 का भी चेक कर लेते हैं. हाँ, all have been converted into the cost element. ठीक है. So these are the three methods I showed to you today, by which you can convert all your expenses into the cost elements. So अगर one by one करना है तो like that KS01, या फिर directly you can go to FS00 and edit cost element. You can convert the expenses into cost elements, and but if you want to convert the expenses into cost elements in bulk, so you have to follow these 3 steps which I have showed to you. So if you like my videos, do subscribe to my channel and like my videos, and do give a lot of likes, and also share my videos with your friends. And you can also put your comments in the comment section about any question, any query. I would try my best to give all the answers to all of your questions. So अगर कोई questions हो तो ज़रूर लिख सकते हैं आप लोग, कोई problem नहीं है. और अगर कोई particular video है, कोई concept है नहीं समझ में आ रहा है, so I can create video upon that topic also on the demands. Okay, so next video again I will come with a unique video, with another topic, with some different topic obviously. So till then, bye bye.